Good morning, sir. Very good morning. So today, I think we should start the unit 5. Clear? Yes, sir. Okay. So in before going to start, we exactly see what we had discussed in the network layer as well in the unit 4. We have discussed so many things in the network layer exactly. What is how the communication is done here. Then we have discuss about UDP, TCP protocols, clear? Then ATM layer, session layer design issues, and so many the things we have discussed in that particular portion. Now, before going to deal with the application layer, okay, so students are not connected right now. Only you are connected, not and Yes, sir. okay, it might get. mm, Okay, so I'm just sharing you. So before going to discuss about the basically application layer, clear? So basically we are dealing with the you are getting this diagram. You are getting this diagram. Yes, sir. Okay, so a application layer exactly deals with the or we can say it provides the services to the users. Exactly clear. It just provides the services to the users that the communication is done through logical connection. If we talk about uh, application layer, so we can say the communication between two nodes or two ends, exactly a type of logical connection. Yeah. Now, what is logical connection? Logical is type of imaginary connection. Clear? We have studied about in network layer that the communication is done through routers and switches, LAN and WAN switches in between them, between node, source node and destination node. So here you can see in this diagram also we have the same type of structure. We have Alice and Bob. Both are communicated their data through various routers in between them. There's a router R1, R2, R3, R4, R5, R6, R7. You can say ISP is the internet service provider. So they can get communication with the help of these routers and exchange their data. Clear? So router has their routing table through which it can route the data which is coming from the source end. Okay? And then maintain the routing table and updating at regular interval. So you can see if we talk about the application layer type of communication, there is a communication done between Alice and Bob. That, but it is a type of what? A type of logical connection. We can say it is a type of imaginary connection. Clear? So we just assume that there is a communication between Alice and Bob, but it is a not a type of virtual connection. This is a type of logical connection. Clear? So virtual connection is exactly a type of establishment before data getting transferred. But the logical connection is not a type of establishment of the connection. Clear? So it is just into the imagination that the data is getting transferred from the application layer at the source end to the application layer at the destination end. But it is in the logical fashion. Yes, you can see, which means that the two application layer assume that there is a imaginary direct connection through which they can send and receive messages. So it is a direct connection. You can see there is a logical connection, which is a direct path between the sender and receiver. Yes. So they can send and receive messages through a logical connection. It's a basic diagram here.
So now we come to the application layer that consists in your syllabus, basically the basic transfer protocols that are covered in this particular unit. The transfer protocol basically like something very important, that is file transfer protocol. That is a well-known protocol, that is FTP. Clear? And another is, वैसे तो हमारे पास बहुत सारे protocols हैं ट्रांसफर के लिए फाइल के लिए, जैसे TFTP is also one of them. Clear? Then SMTP, that is simple mail transfer protocol, is also there. Okay? Then POP is the post office protocol. So we have so many things is there, so through which we can communicate the message or data packet, clear, or some text or video audio information can also exchange between two ports at any time. Clear? So so now we will start with the communication. Also, DNS server is also the part of this. So you all being aware with the DNS server also. So I'm just going to start with the discussion here. So I'm just telling you. Okay, so start with the DNS, that is domain name system. So DNS is a basically a type of domain name system या server. फिर आप लोग जैसे पढ़ते होंगे कोई भी वेब एड्रेस लिखा होता है www.this.com या .in या .org या समथिंग एल्स, सभी लोग देखते होंगे लास्ट में एक केस सेंसिटिव होता है, जैसे .com लिखा होता है या .in लिखा होता है, ठीक है, या .org लिखा होता है। जब भी कोई वेब एड्रेस लिखते हैं तो जो लास्ट में जो com, org या in या वॉट एवर इज दैट, क्लियर, वो आपका एग्जैक्टली डोमेन नेम रिप्रेजेंट करता है, वो उस पूरे आईपी एड्रेस का डोमेन नेम है। दैट इज कॉल्ड द डोमेन नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर आईपी एड्रेस। क्लियर? सो एग्जैक्टली जो भी आईपी एड्रेस होते हैं, दे आर बेसिकली कन्वीनियंट एंड कॉम्पैक्ट वे फॉर आइडेंटिफाइंग मशीन्स एंड आर फंडामेंटल इन टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट्स। सो जो भी आईपी एड्रेस है वो उस मशीन को डिफाइन करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि ये हमारा सिस्टम है, ये इस आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उस आईपी एड्रेस से हम सिस्टम को लोकेट कर सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है? जैसे मोबाइल फोन्स में IMEI नंबर्स होते हैं, यू ऑल आर अवेयर विद द IMEI नंबर, इसको ईमी नंबर भी बोलते हैं। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माय वॉइस प्रॉपर्ली? Yes, sir. ओके, सो जैसे ईमी नंबर होते हैं हमारे मोबाइल फोन्स में, जिससे हम लोग मोबाइल फोन को लोकेट कर सकते हैं। क्लियर? इफ सपोज द फोन इज स्टोलन और ड्रॉप्ड समवेयर एल्स एंड यू जस्ट वांट टू locate that. So just by using the IMEI number, suppose you don't have SIM accessing on that particular cell phone, so you can just access through IMEI number. Clear? If you apply on the surveillance, and then you can check through the IMEI number that what is its location. So that for that particular system या आपका मोबाइल फोन है, तो वैसे ही जो भी आईपी एड्रेसेस होते हैं वो एग्जैक्टली लोकेट करते हैं, जो भी सिस्टम्स है उनको आइडेंटिफाई करते हैं। क्लियर? सो वी आर हैविंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट परमिट्स यूजर्स टू यूज सिंबॉलिक नेम्स, बट द अंडरलाइंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एग्जैक्टली require addresses. Clear? So you can see, so this require the use of names and proper syntax with efficient translation mechanism. So you can see this is a client server model where you can see the client accessing to the server with the internet. Clear? So so it is a type of client server model in which the client is accessing to the server with their particular domain name. So it was just invented for this purpose exactly, which is a naming scheme that uses a hierarchical domain-based naming scheme on a distributed database system. Yeah? So each domain is divided into subdomains, and these are further categorized. Clear? So domains are represented by a tree, जिसको हम लोग बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं,
जो कि केस सेंसिटिव होता है. डोमेन नेम इज ए वेरी केस सेंसिटिव. सो स्मॉल लेटर में कॉम लिखते हैं, COM कॉम मीन्स द सेम मीनिंग. ठीक है. सॉरी, केस इनसेंसिटिव है तो मतलब आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं. सो एवरी नोड हैज a label which is 63 character long. We nodes वो 63 character longs हैं. So the root of the tree is a special node with a null label. रूट जो होता है उसका कोई लेबल नहीं है, उसके बाद जो भी है जितने भी डिवाइड हो रहा है वो सब आपके 63 करंट लेबल्स हैं. क्लियर. So this is what which is divided exactly belong to what, as you can see categories for VNet. Clear. So this is what, this is the domain name exactly. जैसे com is exactly यूज होता है आपका कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए. जब हम किसी कॉमर्शियल एप्लीकेशन के लिए कोई हमारा एड्रेस डिजाइन है तो दैट विल यूज द डोमेन नेम के लिए डिजाइन होगा. ठीक है. एंड सपोज गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवाइडेड है तो GOV यूज होगा. मिलिट्री एप्लीकेशन के लिए डिवाइडेड डिजाइन होता है MIL. इस तरह से NET फॉर नेटवर्क, ORG फॉर ऑर्गेनाइजेशन, INT फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन. क्लियर. So each domain name is named by the path upward from it to the root. So the components are separated by dots. Dot लगा के हम लिखते हैं .com, .in, whatever is that. Whenever a new system is installed in a zone, जब किसी जोन में कोई नया सिस्टम इंस्टॉल होता है तो DNS एडमिनिस्ट्रेटर जो है फॉर द जोन एलोकेट्स नेम एंड एन IP एड्रेस फॉर द न्यू सर्वर डेटाबेस. ठीक है. तो जब भी कोई नया सिस्टम इंस्टॉल होगा तो जो भी DNS एडमिनिस्ट्रेटर होगा जिसको ये पावर है कि वो उसको एक पर्टिकुलर एड्रेस अलॉट करेगा एंड एलोकेट्स अ नेम. क्लियर. So a zone exactly is a subtree of the DNS tree that is administrated separately. When new host is to be registered, the manager interactively enters a name and IP address and other related information. Now these are some resource recorders regarding DNS. Clear. We are having some DNS components also. So it includes basically domain, domain name, name server, name resolver, name cache, zone. Clear. So each are having some individual meaning. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखा हुआ है umeshpublications.com. It is the suit for Umesh Publications. Clear. So domain name exactly defines करता है DNS as being the sequence of name and domain. तो जो भी डोमेन नेम है वो क्या डिफाइन करता है, defined by the DNS as being the sequence of names and domain. For example, जैसे यही हम लेते हैं umeshpublications.com could be the domain name. डोमेन नेम हो सकता है. In the name server software program maps name to address. जो नेम सर्वर है ये क्या करता है, it is a type of software. It basically software programs maps name to the address. It does this mapping domain name to IP address. A name resolver is a software that functions as a client interacting with a name server. And name cache is the storage used by the name resolver to store information frequently used. Zone is a contiguous part of the domain. Clear? Now the next one is name address resolution. इसको recursive solution भी हम लोग बोल सकते हैं. It is used by the DNS, is very important and convenient to human. Cannot use for communication through the internet. Clear? So this requires mapping a name to an address known as name address resolution. This is requires the mapping a name to the address. Here, the name server is there. So name server exactly mapping of the name to the address. It can be done using a name server where a lookup table is maintained. Here,
A single name server could contain the entire DNS database and respond to all queries about it. So if we talk about zone, to avoid this problem, the entire namespace is divided. So आप देख सकते हैं कि जो हमारा entire name space है उसको हम तो डिवाइड कर रहे हैं to non overlapping zones में. So each zone contains some part of the tree and also contains name servers holding the authorization, the information about the zone. So जो हमारा zone है वो will have a primary name server and one or more separated secondary name servers. Clear? तो ये देख लीजिए यहाँ पे ये आपका इन हो गया, दिस इज सपोज रूट सर्वर. सो उसके बाद हम लोगों ने इसको फर्दर डिवाइड किया, अर्नेट दैट इज सर्वर फॉर अर्नेट डॉट इन. फिर जैसे जैसे डिवाइड होता जाएगा वो अटैच होता जाएगा, smvec डॉट अर्नेट डॉट इन. तो ये अर्नेट डॉट इन तो आ ही रहा है, smvec भी आपका इसके साथ अटैच हो गया. csc क्योंकि ये उसी का पार्ट है, तो सर्वर फॉर csc, अब csc अटैच हो गया, csc डॉट smvec डॉट अर्नेट डॉट इन. So this is a type of chain here, which is associated with the previous one. Here, now this is what this is your recursive resolution performed in ARP, address resolution protocol, basically. So you can see this is the diagram for this. Now we come to the file transfer protocol, basically, which is covered in this particular application layer node syllabus as well. After DNS server, we come to what the file transfer protocol. Have you ever accessing about the file transfer protocol? आप लोगों को पता है कि क्या होता है ये file transfer protocol? Anyone of you are aware with the file transfer protocol technology? The basic information. एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में फाइल ट्रांसफर करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वही हमारे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है. Okay. Anyone else? किसी और को कुछ पता है? कितने तरह के फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आपने पढ़े हैं? पढ़ा है आपने? कितने तरह के फाइल, जैसे इसका नेम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इट मींस वी आर just accessing the exchange of file from one end to another end. Clear? So some different protocol schemes are used to accessing this type of transfer of message or any video content or anything else. Clear? So मैं ये मतलब मेरा कहने का मतलब है, if you have studied something about a file transfer scheme, so what are the different kind of transfer of files scheme? कोई बताएगा what are the different schemes are there? जैसे एक होता है it depends on the types of content. Clear? Depends of the types of content. जैसे हम लोग मेल ट्रांसफर करते हैं तो SMTP प्रोटोकॉल यूज करते हैं, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इज इट क्लियर? वी आर यूजिंग, ऐसे कोई अगर नॉर्मल फाइल हमको ट्रांसफर करनी है, वी जस्ट यूजेस द फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. क्लियर? ऐसे ही और भी हैं, जैसे TFTP प्रोटोकॉल है जिसको हम बोलते हैं ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. इसके बाद आपका आता है HTTP is also used for the hypertext transfer protocol. इसके बाद आपका एक प्रोटोकॉल सिक्योर है. हाँ, जो आपका वेब एड्रेस होता है उसी में HTTP प्रोटोकॉल यूज होता है. ठीक है ना? तो जब भी कोई वेब एड्रेस आप लिखते हैं तो स्टार्टिंग में एक आप उसमें HTTP is exactly S लग गया तो that is for secured connection. Without S is what? Insecure connection. Clear? That is HTTP, hypertext transfer protocol. इसके बाद आपका वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, HTTP भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें. Then we have POP, that is post office protocol. So we have different type of protocols that belong to the application layer, basically, which is used to access the transfer of data or transfer of information between two systems, between source and destination.
Yeah, one end to another end means node to node communication. So if we talk about initially, we will understand what is FTP. FTP. The FTP exactly a type of सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है FTP में मेजर चीजें क्या है. पहले तो ये हो गया कि ये फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है. दिस इज अ बेसिक डेफिनेशन. FTP belong to the transfer of file from one machine to another machine. It requires two type of TCP connection. अगर आपसे कोई पूछे in FTP how the communication is done, so you will directly tell them that TCP IP suite exactly responsible for the establishment of connection. Yeah, TCP exactly plays the role for the connection establishment. So before going, the data is getting to be transferred. Before the data is getting to be transferred, there is a connection establishment takes place in this type of file transfer protocol scheme. So it exactly follow the TCP type of connection establishment. Yeah. So TCP आप लोग को हमने पहले भी बताया है. TCP में क्या होता है, वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है. ठीक है, बिफोर डेटा इज गेटिंग टू बी ट्रांसफर. अभी पिछले ही चैप्टर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बिफोर द डेटा इज गेटिंग ट्रांसफर वी हैव जस्ट ए वर्चुअल कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट होता है. और दिस इज अ टाइप ऑफ सिक्योर कम्युनिकेशन as compared to UDP, that is user datagram protocol. UDP is also a type of communication interface, but UDP is a totally what a type of connectionless service. और TCP जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस है. ठीक है, तो कनेक्शन ओरिएंटेड में हमेशा जो डेटा ट्रांसफर होता है वो एस्टेब्लिशमेंट के बाद होता है. पहले आप एस्टेब्लिश करेंगे कनेक्शन को, तब डेटा ट्रांसफर करेंगे. यूडीपी में क्या होता है कि एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है. The file is getting transferred from one place to another place directly without any kind of establishment. Yeah. So now if we discuss about the FTP, basically it uses the port number 21 at the server end. So we have a client servers model. So you can see this is a client, this is a server, and in between the client and server there is a TCP/IP protocol suite which uses two paths exactly. One is used for the connection control, control connection, another is used for the data connection. Clear? So this is the type of two-way communication. So both server and client can exchange data simultaneously. Clear? Uh, and also the data connection is there, that is also two-way type of on both client and server, which is exactly used to store the data at certain memory location. Clear? And at the server, at the client end, there is a user interface control process and data transfer process. So data transfer process on both server and client end is responsible for the communication of data through the TCP protocol. Clear? Also, the control process on the both side is used for the control connection. Clear? So control connection exactly is a very important part of the system, which exactly control the whole type of communication between uh, 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 server and client. Clear? So it is just monitored by the server end properly. Clear? So so one of the control connection that is established on port 21 at the server. पोर्ट 21 है, ये स्पेशली यूज होता है सर्वर के एंड पे. ठीक है. सो इट इज ए यूज बाय द सर्वर एंड फॉर द कंट्रोल कनेक्शन. द सेकंड टीसीपी कनेक्शन इज ए डेटा कनेक्शन दैट इज यूज टू परफॉर्म ए फाइल ट्रांसफर. तो दो हमारे पास कनेक्शन है, कंट्रोल एंड डेटा. डेटा कनेक्शन एंड कंट्रोल एक्शन, द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जिसको जो हम कंट्रोल कर रहे हैं. ठीक है ना. सो So data connection must be established for each file in either direction as shown in figure. तो दो कनेक्शन हमारे स्टेब्लिश हो रहे हैं एफटीपी में. ठीक है. सो ए कंट्रोल कनेक्शन इज स्टेब्लिश फ्रॉम द यूजर टू द सर्वर पोर्ट. द एफटीपी कमांड्स एंड रिप्लाइज द एक्सचेंज्ड वाया द कंट्रोल कनेक्शन.
ठीक है। तो एफटीपी क्या करता है, जो कमांड करता है और रिप्लाईज, जो भी एफटीपी कमांड्स है या रिप्लाईज हैं, दोनों एक्सचेंज होती हैं किसके थ्रू, कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू। जो आपका ये ऊपर कंट्रोल कनेक्शन दिख रहा था, उससे आपके एफटीपी कमांड्स एंड रिप्लाईज, मतलब जो भी कमांड जा रही है या जो भी रिप्लाई आ रहा है, वो सब एक्सचेंज होता है किसके थ्रू, कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू। जैसे मान लीजिए उसने रिक्वेस्ट किया, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया, तो रिक्वेस्ट आपकी किससे जाएगी, कंट्रोल वाले उससे जाएगी। ठीक है। उसका कुछ रिस्पॉन्स आया, ठीक है, तो वो किससे आएगा, वो सर्वर से सर क्लाइंट की तरफ, वो भी कंट्रोल वाले से आएगा। ठीक है। बाकी डेटा कनेक्शन ओनली यूज फॉर द कम्युनिकेशन ऑफ डेटा व्हेन द रिस्पॉन्सेज आर गेटिंग एक्सचेंज प्रॉपर्ली। ठीक है। सो द यूजर प्रोटोकॉल इंटरफेस, दैट इज पीआई, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंडिंग एफटीपी कमांड्स। कौन भेजेगा एफटीपी कमांड, तो ये आपका यूजर इंटरफेस, जो यूजर है क्लाइंट एंड पे, यही कमांड को भेजता है। ठीक है, थ्रू control connection. ठीक है। So we can say user protocol interpreter, that is PI, is responsible for sending FTP command and interpreting the replies. The server PI is responsible for interpreting commands. कहने का मतलब क्या है कि पहले ये रिक्वेस्ट भेजेगा, इस रिक्वेस्ट का वेट करेगा कि सर्वर आपको रिस्पॉन्ड करे पहले, कि उसके पास स्लॉट अवेलेबल है कि नहीं अवेलेबल है, मैसेज को एक्सचेंज करने के लिए। ठीक है। अगर स्लॉट नहीं अवेलेबल है तो वो एक्नॉलेज नहीं करेगा, अगर स्लॉट अवेलेबल है तो इट विल एक्नॉलेज टू द क्लाइंट अगेन that I have an open slot for the communication and you need to send the data right now. Clear? So it just wait for the reply by the server end, server PI. ठीक है। And sending replies and directing to the server data transfer process. और जब उसको मिल जाएगा then it will directly sending a reply for the data transfer. Clear? To establish a data connection and transfer. So the commands are used to specify information. तो जो भी कमांड यूज हो रही हैं, that is used to specify information about the data connection and transfer. ठीक है। वो कमांड जो जितनी भी हम यूज कर रहे हैं वो स्पेसिफाई कर रहा है डेटा कनेक्शन एंड ट्रांसफर को। So a data connection is established usually upon request from the user। जब यूजर का पोर्ट इंटरप्रेटर जो है वो यूजर इंटरप्रेटर जो है जब रिक्वेस्ट करेगा तभी डेटा ट्रांसफर होगा। ठीक है। सम सॉर्ट ऑफ फाइल ऑपरेशंस आर देयर। ठीक है। सो यूजर पीआई यूजिंग ए पोर्ट कमांड, तो यूज क्या करता है, वो पोर्ट कमांड यूज करता है। पोर्ट कमांड इज ए पोर्ट नंबर that associated with this particular user request to the server end. Clear? So user PI using a port command upon receipt of the port number by the control connection, the server issues an active open to that same port. कहने का मतलब है कि जब क्लाइंट ने एक पोर्ट नंबर अलॉट किया कि इस पोर्ट नंबर से मैसेज ट्रांसफर किया कि नाउ आई वांट टू कम्युनिकेट डेटा, सो एक रिक्वेस्ट भेजा सर्वर की तरफ, तो सर्वर ने भी उसको एक्नॉलेज किया द सेम पोर्ट नंबर कि नाउ थ्रू कंट्रोल कनेक्शन के थ्रू I am now actively open for the same port. Clear? So the server always uses the port 20 for its end of the data connection. The user DTP then waits for the server to initiate and perform the file transfer. यूजर जो डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल है वो वेट करेगा exactly to serve for the server to initiate and perform the file transfer. So the user is responsible for requesting a close of the control connection, although the server performs this action. तो जो यूजर है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर रिक्वेस्टिंग ए क्लोज ऑफ द कंट्रोल का, मतलब उसको क्लोज भी करेगा ना जब कम्युनिकेशन डन हो जाएगा, एंड इट विल ट्राई टू क्लोज द कनेक्शन। ठीक है। सो उसके लिए भी वेट करेगा कि हमारा जो कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट है ना इट शुड गेट क्लोज। क्लियर? सो if the control connection is closed while the data connection is still open,
then the server may terminate the data transfer. सारी कुछ कंट्रोलिंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज मान लीजिए डेटा ट्रांसफर आपका ओपन रहता है, कंट्रोल कनेक्शन क्लोज हो जाता है, मतलब अब कोई मैसेज नहीं आ रहा है, रिक्वेस्ट कोई नहीं आ रही कंट्रोल मैसेज के थ्रू, और स्टिल डेटा ट्रांसफर कनेक्शन इज ओपन। सो उस केस में क्या होगा कि जो सर्वर है वो मैसेज लेना बंद कर देगा, वो डेटा ट्रांसफर को टर्मिनेट कर देगा। सो इट इज ऑल डन बाय द server end. So the data connection is usually closed by the server. So in general, 3 types of information must be specified uh, that can be supported by every FTP implementation. So पहला है FTP, which supports basically ASCII character, EBC, DIC, like that, and image को जैसे हम लोग बाइनरी पिक्सेल्स में ब्रेक करते हैं उसको सपोर्ट करता है, ठीक है। So local specifies that the data is to be transferred in logical bytes. जैसे हम लोग कोई इमेज अगर ट्रांसफर करते हैं तो कैसे करते हैं, उसको हम पिक्सल बाय पिक्सल ट्रांसफर करते हैं। So information must contain the bits and bytes information, clear? Also it is suppose a rectangular box is there, so pixels are arranged in a rectangular way, clear? And any image is just image or video is just contained in a box, rectangular box, which is just containing the pixels information, and that is supposed to be transferred, clear? So it is specified that the data is to be transferred in logical bytes where the size is specified in a separate parameter. So ASCII generally is a default character which is used for the file type, clear? Now the second one is the data structure. Is FTP supports file structure, record structure, and page structure. So file structure is the default specification. Yes, तीनों support करता है, but the file structure is the default structure is there. Next one is the transmission mode. So FTP supports basically all stream type of data communication or block type of communication or compressed type of data communication, और सभी को support करता है, but in general it uses stream type of data communication. stream mode को support करता है, मतलब कह सकते हैं default way में। Now we come to tribal file transfer protocol, that is TFTP. TFTP is another file transfer protocol. Basically it's a minimal protocol for transmitting file without authentication and no separation of control information and data in file transfer. मतलब कहने का ये है TFTP FTP से कैसे डिफर करता है। सबसे पहली चीज है कि जो TFTP है, जिसको हम लोग ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोल रहे हैं, ये TCP को यूज नहीं करता है। जैसे FTP आपका कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करने के लिए TCP को यूज करता है, दैट इज ए वर्चुअल सर्किट कनेक्शन बिफोर गोइंग टू बी डेटा ट्रांसफर। लेकिन जो आपका ये है क्या बोलते हैं TFTP, ये आपका किसी भी वर्चुअल कनेक्शन को एस्टेब्लिश नहीं करता, मींस TCP को यूज ही नहीं करता है। इट जस्ट यूजेस व्हाट, it just uses exactly your UDP protocol, clear? UDP क्या है? UDP विदाउट कनेक्शन है, मींस कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है। तो इसमें जो भी डेटा एक्सचेंज होता है वो थ्रू UDP होता है। UDP में आपका डेटा लोड हो जाता है, देन इट गेट कम्युनिकेटेड, ठीक? तो एक तरह से UDP ब्लॉक है जिसके अंदर डेटा आ जाता है, देन इट गेट्स कम्युनिकेटेड। So it is a type of connectionless approach, and also in this type of service, basically we can say the data may get lost also. Data आपका loss भी हो सकता है क्योंकि it is not a connection oriented service. Yes? और एक इसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि जैसे FTP दो रास्ते यूज करता है, एक आपका कंट्रोल एक्शंस के लिए और दूसरा फाइल ट्रांसफर के लिए या डेटा ट्रांसफर के लिए। जो TFTP है वो केवल सिंगल पाथ यूज करता है दोनों के लिए, कंट्रोल सिग्नल के लिए भी और डेटा ट्रांसफर के लिए भी, ठीक है? मेरी आवाज सभी को आ रही है प्रॉपर्ली? Am I audible properly to all of you? Yes, sir. Yes. Okay, so
TFTP और FTP का डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन FTP एंड TFTP। तो इससे कुछ पॉइंट मैं आपको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, जैसे FTP एग्जैक्टली सिक्योर कम्युनिकेशन है एज कम्पेयर टू TFTP, क्योंकि FTP आपका TCP प्रोटोकॉल पे बेस्ड है, TFTP आपका UDP प्रोटोकॉल पे बेस्ड है। TFTP आपका कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस अप्रोच फॉलो करता है और TFTP आपका कनेक्शन लेस अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। FTP आपका सिक्योर कम्युनिकेशन है, TFTP इज इनसिक्योर कम्युनिकेशन। FTP के अंदर आपके दो पाथ यूज होते हैं कम्युनिकेशन में, एक कंट्रोल एक्शन के लिए और एक आपका डेटा ट्रांसफर के लिए FTP के अंदर, ठीक है। और TFTP में आपके सिंगल पाथ यूज होता है, सेपरेट पाथ यूज नहीं होता दोनों के लिए, एक ही पाथ पे कंट्रोल एक्शन भी परफॉर्म होता है और डेटा ट्रांसफर भी परफॉर्म होता है। अभी हम लोग देखेंगे, वी हैव द टेबल फॉर दिस। FTP जैसे आपका पोर्ट 21 या 20 यूज करता है, इसके अंदर पोर्ट दूसरे यूज होते हैं, ठीक है ना। स्पेसिफिक पोर्ट्स आर देयर बट डिफरेंट पोर्ट्स इज देयर। अभी मैं बताऊंगा, जैसे ये 69 को यूज करता है, सर्वर एंड जो इसका है UDP पोर्ट वो 69 को यूज करता है, ठीक है। सो मैं भी दिखा देता हूँ, हाँ। तो ये यहाँ पे कुछ डेफिनेशन पार्ट भी इसकी लिखी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। TFTP बेसिकली ट्राइबल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इज ए मिनिमल प्रोटोकॉल फॉर ट्रांसफरिंग फाइल विदाउट ऑथेंटिकेशन and no separation of control information and data in FTP as in FTP, clear. So it is widely used by device without permanent storage for copying an initial memory image, clear, memory image that is bootstrap for a remote server when the devices are powered on. So due to lack of security feature, the use of TFTP is generally restricted. It uses the unreliable transfer protocol, that is UDP, for data transport, clear. So अभी मैंने आपको बताया ये UDP को यूज करता है डेटा ट्रांसमिशन के लिए। So message is carried in a separate UDP datagram. The first two bytes of the TFTP message specify the type of message. जो पहली दो बाइट्स होती हैं, जो भी मैसेज TFTP के थ्रू ट्रेवल कर रहा है, वो पहले दो बाइट्स उसमें रिप्रेजेंट करती हैं किस तरह का मैसेज है, टाइप ऑफ मैसेजेस, which can be a request to download a file, comma request to upload a file, comma a data message or an acknowledgement or error message, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। So a TFTP session is initiated when TFTP client sends a request to upload or download a file, ठीक है। सो ये देखिए, देख सकते हैं आप, जब भी TFTP सेशन इनिशिएट होता है, व्हेन TFTP क्लाइंट जो है एक रिक्वेस्ट भेजेगा टू अपलोड और डाउनलोड ए फाइल। ये क्लाइंट है, ये सर्वर है TFTP का, इसने एक रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट सेंड किया, ठीक है, टू रिक्वेस्ट फॉर अपलोडिंग और डाउनलोडिंग ए फाइल फ्रॉम एन ephemeral to UDP port number 69. So this is a UDP port number, server port number, basically for TFTP type of communication. Okay. And when the request is received, the TFTP server picks an ephemeral UDP port of its own and uses this port to communicate with the TFTP client. Clear? So thus both client and server communicate using ephemeral ports as shown in figure. So यहाँ से डेटा मतलब रिक्वेस्ट सेंड किया, फिर रिसीव हुई, देन इट जस्ट परफॉर्म द एक्शन ऑफ कंट्रोल एंड डेटा ऑन द सिंगल लाइन, क्लियर। सो यहाँ देखिए दो अलग अलग लाइन यूज नहीं हो रही हैं, we are having a single line for control and data exchanging, clear. Since UDP does not recover lost or damaged data, यहाँ कोई रिकवरी नहीं है, अगर डेटा लॉस हो गया तो हो ही जाएगा, डैमेज हो गया तो हो ही जाएगा। So it is responsible for exactly maintaining the integrity of the data exchange. You all are requested to kindly rejoin the session. That's why the few things which are left now, which will be covered here. So the TFTP transfer data blocks of 512 bytes. Each block is assigned a 2-byte long sequence number and is transmitted in a separate UDP datagram. So a block must be acknowledged before the next block can be sent.